Hey, what's up, guys? Welcome back to another killer episode with Amar Oja. Welcome back to Fakana, guys. So, in life, you should definitely know how to manage three things. First is your life, personal life, फिर job life हो गया, उसके बाद हो गया अपना जो मतलब जैसे artist life होता है कैसे manage करना. So right now in this podcast we are having Rohit Khanna. He is a person who works in the ICICI Bank itself, and he's also an artist, which many people don't know. But that's why I'm doing this podcast, to show you the art in him and how he tries to manage everything together. So let's just go ahead and find out more about Rohit Khanna. Full power, no start 25. What's up, Rohit? Welcome to Fakana with Amar Oja. Thank you, Amar. Thank you so much. So Rohit, now I know a lot about you. Like a lot in the sense, meaning हम लोग मिले ही मतलब, you know, in a coincidence, matlab, I was in a supermarket working. Giving me discounts. Yeah, so you got extra discounts, so you should thank me for that. Always. But unfortunately, because of the discounts, our business is shut. This is much better one. So now, Rohit, now I don't know much about you. So let's just go from your childhood, how everything has started. Because I want to tell people that you're working in a bank. At the same time, you're a singer as well. Untrained singer, yes. Yeah, so let's just go from how it started from your education part till the journey right now. All right. So to tell you, I come from a small city called Hisar that comes in Haryana. I did my schooling and every single thing till +2 over there in a convent. And I used to participate in every single competition, be it a fancy dress competition, be it a singing competition, be it a debate competition, and yes, feeling proud that I used to always come first, and you know, people used to get jealous and I used to get happy. Yeah. And that gave me a little motivation. Okay, then कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. You know, I can go more step closer. I can groom myself a little better from every single thing that I've done. So the singing thing actually took place when mom, dad, and me were traveling to my aunt's place, and there was a movie called Murder. इमरान हाशमी सबको याद होगा, राइट? सो इनफैक्ट उसमें एक गाना था, कहो ना कहो. Okay. सो दैट जो कैसेट आता था पहले, वो कैसेट की बी साइड में कैरियोके ट्रैक था, राइट? एंड बाय देन आई डिड नॉट नो व्हाट कैरियोके मींस. मेरे लिए सिर्फ एक बिना शब्द का गाना था, या जो भी कह लो, इट इज जस्ट नॉर्मल ट्यून. सो आई ट्राइड दिस कहो ना कहो, एंड फिर उसके बाद भीगे होंठ आया. भीगे होंठ मैंने जान के चलाया नहीं, सो आई स्किप्ड इट. मैंने कहा क्या सोचेंगे, क्या सुन रहा हूँ. सो एनीवे, फिर आई रियली लव दैट सॉन्ग एंड आई केप्ट हमिंग दैट सॉन्ग टाइम एंड अगेन along with the song, along with the singer. So I thought let's give it a try. That was the very first time I believe that जो भी आपके सुर ताल whatever म्यूजिक इंडस्ट्री में जो जार्गन्स हैं, सो उसका मैंने ट्राई किया विद द कैरियोके ट्रैक, विद द इंस्ट्रूमेंटल ट्यून, एंड इट केप्ट ऑन प्लेइंग. पापा केप्ट ऑन ड्राइविंग. देयर वाज लाइक वेरी नाइस रोड्स एंड साइड में, क्योंकि वो मेरी जो आंट है वो उस टाइम पे उत्तराखंड में रहती थी. सो वी आर गोइंग टू रुड़की एक्चुअली. सो साइड में सारे ट्रीज थे, अच्छी रोड्स थी उधर, एंड वो गाना स्टार्ट किया एंड आई फेल्ट समथिंग फ्रॉम विद इन. सो यू नो दैट प्रिक ऑफ अ सेकेंड, दैट रियलाइजेशन दैट यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है. You know, you feel happy. The first thing is you smile with your lips, and the second thing is you smile with your heart. The latter one was happening with me that time, and I told my mom, can I sing this one on Teachers Day? So to tell everyone, मेरी स्कूल में एक टीचर क्रश हुआ करती थी. I will not take the name, of course not. And हाँ, लड़कियाँ भी क्रश थी, no doubt about that. But I felt कि ठीक है, let's perform this on Teachers Day. So मैंने गिटार पकड़ा. So I suddenly मैंने कॉन्वेंट में था, तो फादर्स एंड ऑल सबके पास वो पियानोज एंड गिटार्स होते थे, तो रेडीली अवेलेबल. दो आई डिड नॉट नो, एंड आई स्टिल डू नॉट नो हाउ टू प्ले अ गिटार, इवन अ स्ट्रिंग ऑफ दैट. हैप्पी बर्थडे भी गाना नहीं आता, बट ठीक है. सो मैंने गिटार पकड़ा, माइक पे गया, उसको इशारा किया, बजा, एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग. मैंने आँख बंद किया. वो मेरा ऑडियंस के साथ पहली बार था विद अ म्यूजिक एंड विद अ प्रॉपर सुर ताल में मुझे गाना है. आई वाज बिट कॉन्शियस टू, and I was a bit nervous, but शुरू से ही I've noticed one thing, that whenever music strikes my ears, वो सारा कुछ it becomes blank and it becomes just like, you know, you're gonna perform well. Yeah. Right, I tell to myself कि होगा, अच्छा होगा, don't worry about it, and people will appreciate it. I started and I saw some people over there smiling, ऐसे.
दैट गिव मी कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं अच्छा गा रहा हूँ, दे आर लाइकिंग इट, शी इज लाइकिंग इट और ही इज लाइकिंग इट. गाना स्टार्ट किया, गाना खत्म हुआ, एवरीबडी क्लैप्ड सो लाउड, वंस मोर का नारा आया, वंस मोर. वंस मोर तो नहीं करूँगा मैं. सो उसके बाद व्हेन आई फिनिश्ड, व्हेन आई गॉट बैक इनटू माय क्लासरूम आफ्टर दैट, यार एक बात बता, ये पीछे टेप बज रहा था क्या? मैंने कहा यार नहीं, क्यों? कहता तू गिटार बजा रहा था क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे कर रहा था बस. वो भी बजा के माइक ऊपर था, कैसे है गिटार का साउंड? तो नहीं, टेप बज रहा था, तू झूठ बोल रहा है. नाउ दिस केम फ्रॉम एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द स्कूल. दीवारों, सब दीवार ऐसी बोल रही थी कि भाई टेप बज रहा था. मैंने कहा नहीं, इट वॉज क्लियर. तो उस टाइम टीचर आया नहीं था क्लास में. आई सेड वेट अ मिनट. मैं गया, ब्लैक बोर्ड के आगे खड़ा हुआ और मैंने वही गाना स्टार्ट किया, विदाउट म्यूजिक. नाउ द क्लास शाउटेड एंड एवरी सिंगल थिंग, वो. सो देयर द जर्नी स्टार्टेड. कहो ना कहो, फिर उसके बाद एंड देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन सम मोर. फिर मैंने कुछ ऐसी गाने रिकॉर्ड करता रहा. उस टाइम मोबाइल आपके रिकॉर्डर्स इतने नहीं थे. एंड देन ऐसी कैजुअल में मैंने करता रहा एंड देन इट हैपेंड. फिर मुझे थोड़ा सा होता है दैट आई वांट टू गेट इनटू दैट स्टेप. आई वांट टू बी अ सिंगर नाउ, आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर नाउ. जो मर्जी हो जाए, आई वांट टू ग्रूम माई सेल्फ. ट्राई किया कि कहीं से कुछ ट्रेनिंग मिल जाए, समथिंग लाइक दैट, बट इट डिडंट हैपन. आई रियली वांटेड टू लर्न म्यूजिक. नाउ बैक इन देयर आपकी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं, डेफिनेटली वहाँ पे पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? एंड अनलाइक आज के टाइम में वे even parents are using their Instagrams and even parents want कि नहीं, हमारा बच्चा तो इन्फ्लुएंसर बनेगा हमारा हो जाए जैसा. So definitely, of course, and it's a big thing today. If I am an engineer, if I'm an MBA and or something like that, and if I'm an influencer is like super duper. उसको importance definitely मिलेगा. 5-star होटल का 50% डिस्काउंट भी मिलेगा. MBA क्या है तू यार, छोड़ दे. So वहाँ से I wanted to become something कि ठीक है, बट पढ़ाई बीच में आ गई बिकॉज मेरे घर में पढ़ाई बहुत सीरियसली लिया करती थी. एंड देन ऑफ कोर्स आई टॉप्ड द क्लासेस एज वेल. सो 10th स्टैंडर्ड पास हुआ, 11th आया, आई थॉट कि लेट्स टेक अ स्टेप अहेड. तो मैं ट्यूशन बंक करके जो पॉकेट मनी मिलती थी मुझे, मैं 100 रुपये स्पेंड करता था एंड 100 रुपये कहीं छुपा देता था. आई हैड अ CD कवर, जितने भी म्यूजिक के गाने थे मैं उसकी सारी CDs बना के एंड आई हैड पैक कंप्लीट एक शैक था उसमें. So then I found a studio actually. I wanted कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो, I wanted to hear my voice in a studio recording. जब भी मैं माइक देखता था, that net in front of mic, that gave me something कि यार I want to sing in a studio. I want to sing in a closed atmosphere जहाँ पे मेरी आवाज़ कैसेट या CD में कोई मेरी आवाज़ सुने and कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे या कोई मुझे फीडबैक दे for that matter. So I went to one studio कि आप ये करोगे क्या? सो उस टाइम 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, राइट? 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी. सो आई डिस्काउंट किया. कहीं से पापा को पता चल गया कि ओके मैं यहाँ पे जा रहा हूँ. आई इनफैक्ट टोल्ड देम कि नहीं, मेरा एक स्टूडियो है यहाँ पे, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करने जाने वाला हूँ, तो आप बात करो, चलो. तो समथिंग हैपेंड एंड इट डिडंट वर्क आउट एक्चुअली. तो मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं, अभी पहले पढ़ाई करो, आफ्टर दैट यू कैन डू वट एवर यू वांट. सो I came back home and I tried to sing and I found that I was crying. Okay. That होता ना एक थोड़ा सा बच्चे का ड्रीम शैटर होना. True. So I thought मैं रो पड़ा and I tried to sing the same song कहो ना कहो again and I couldn't sing. I told everyone कि मेरी आवाज़ गई. I won't be able to sing anymore. It's done and dusted now. बहुत रेज था, गुस्सा भी था, इमोशनल भी था, every single thing. But then I thought ठीक है, हार नहीं माननी है. ठीक है, थोड़े से पैसे जमा किए हुए. उस टाइम मैथ्स का ट्यूशन मैंने बंक किया. एक अपने जो फ्रेंड था मेरा, उसको पकड़ा. मैंने कहा विल यू बी विलिंग टू कम अलॉन्ग विद मी इन द स्टूडियो, एज मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है. बिकॉज एटमॉस्फेयर वैसा था कि आप कहीं अकेले जा रहे हो तो यू नेवर नो कि बीइंग एज अ चाइल्ड कि आपको कौन कैसा ट्रीट करेगा एंड दैट वे. अग्री. सो मैंने 5 गानों की लिस्ट बनाई. द कहो ना कहो वॉज ऑन द टॉप चार्ट. Then it had छू कर मेरे मन को. Then it had मोहब्बत लुटाऊंगा from Abhijit Sawant and 1 or 2 songs more. So I told the studio guy that okay, I have a karaoke. तो मैं सारे घर पे प्रिंट आउट्स उन्हें बड़े लेके गया और वहाँ पे एक जो स्टैंड था उसमें मैंने लगा दिया and I could feel again something कि हाँ अब कुछ हो रहा है. तो गाना स्टार्ट हुआ.
फिर उसने स्टॉप किया कि एक और रीटेक करते हैं, वो स्टूडियो वाला फील आया दोबारा, राइट। फिर उसने एक चीज़ कही, आई स्टिल रिमेंबर द रिकॉर्ड, सेट की आवाज़ बहुत अच्छी है तुम्हारी, एंड इट गेव मी कॉन्फिडेंस। वो आज भी मुझे याद है व्हेन दैट पॉइंट केम इन बिटवीन, व्हेन ही सेड दैट आवाज़ बहुत अच्छी है तुम्हारी, यू नो आई कैन डू समथिंग इन लाइफ, एटलीस्ट ऑन द सिंगिंग पार्ट और एटलीस्ट ऑन द म्यूजिक पार्ट ऑफ इट। सो हुआ रीटेक्स हुआ, एंड देन उसने मुझे शाम को एक सीडी दे दी, उसने एक पेनड्राइव दे दी, एंड आई मेड सीडीज एंड मैंने अगले दिन स्कूल में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी वो, दैट ओके इट्स माई वॉइस, यू शुड हियर, एंड पीपल रियली लाइक्ड इट, पीपल गेव मी कॉन्फिडेंस, एंड सम ऑफ देम आस्क्ड माई ऑटोग्राफ ऑल्सो, स्पेशली अगर कि मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए, देखो ओके, मैंने कहा मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। सो आज भी I feel that, you know, if someone compliments me, one should be kind enough and one should stay grounded. Definitely. Because I feel that आप कितने ही बड़े बन जाओ, the roots should not be left behind. True. So now you should keep on holding to your roots. So, and since then the journey started in engineering हुआ. Engineering में I skipped my engineering after completing 2 years. I pursued BBA. And once upon a time I happened to get a call from Himesh Reshammiya studio also. Wow. So ऐसा कुछ चीज़ें बीच बीच में होती रही, which you know gives me, मैं कभी कुछ भूलता तो अपने आप ही मेरे ख्याल से the ऊपर वाला is along with me on this part of thing कि भाई हाँ तुझे कुछ कुछ करते रहना चाहिए बीच में, you know. So I went to Bombay, थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ वहाँ पे, एक था कि वहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, एंड देन आई गॉट टू नो वहाँ पे बड़े बड़े थे, यू नो, जो भी मैंने थोड़े थोड़े नाम सुने थे वहाँ पे लोग बैठे हुए थे मेरे फ्रंट में। सो वहाँ पे मुझे पता चला दैट पैन इंडिया से सिर्फ 7 ही लोग सिलेक्ट हुए हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम। वाओ, दैट्स सो क्रेजी मैन। दैट वाज माय विनिंग पार्ट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। आई डिड नॉट वांट टू गो इन फ्रंट ऑफ दैट माइक अगेन एज इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स अगेन तो डेफिनेटली, बट एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि यार यहाँ तक छू लिया, अभी तक ऐसा एफर्ट डाल के ऐसा, एंड दैट्स इट फॉर मी। I will take this as my winning thing. I'm very much satisfied, right? And then I went inside to a studio recording room जहाँ पे हमें बिना म्यूजिक एंड इट वाज अ फ्रेश सॉन्ग बेसिकली, राइट। क्यों आंखें हैं नम समथिंग, वो तो बार बार अभी भी वो मैं धुन गुनगुनाता हूँ काफ़ी बार, यू नो, थिंकिंग दैट कि हाँ आई एम स्टिल देयर। सो वहाँ गया, एंड द ग्रेट पार्ट वॉज मैं बैंगलोर से बॉम्बे गया था ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग टाइम्स। जाने के तो मेरे पास पैसे थे, मेरे पास आने के बिल्कुल नहीं थे। I did not even have a single penny in my pocket, कुछ भी नहीं था। That is like, you know, the main artist part of it. कुछ भी नहीं था, मुझे नहीं पता था। एंड बॉम्बे में शायद बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे just a few days or months back, and people started telling me यार तू क्यों जा रहा है? I was like भाई मेरे को जाने दे, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आनी है, देखा जाएगा जो होगा, let me just go, है ना। So of course my kind friends over there, I would never forget their names. तो उन्होंने फिर मुझे लेंड किए कि ठीक है तेरे वापस आने के पैसे ये पकड़, एंड देन ओवर देयर इट हैपेंड। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, देन मैं ऑफ कोर्स आई वाज, यू नो, बिट अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज डेफिनेटली यू हैव सो मेनी पीपल, यू हैव प्रोफेशनल्स ओवर देयर, एंड दिस वाज नॉट अ गेम। बचपन में जो हुआ वो हुआ, बट अभी देयर वाज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। सो उसने मुझे बाहर बुलाया, आई सेड कि क्या, आई वांट यू इन दैट सॉन्ग, आई रियली वांट यू शुड सिंग इन द सॉन्ग, you have a great texture of the voice, but तू थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले अपनी आवाज में। जस्ट इमेजिन दैट यू हैव जस्ट ब्रोक अप विद योर गर्लफ्रेंड, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, कि तो तू क्रिएट कर ले। अब उस टाइम इमेजिनेशन आज तक वाली स्ट्रांग नहीं थी, दैट यू नो यू क्रिएट एन इमेजिनरी गर्लफ्रेंड, यू लव हर एंड देन यू ब्रेक अप विद हर एंड यू देन सिंग इन हर जो भी फीलिंग्स हैं उसमें। सो आई सेड ओके लेट मी ट्राई। फिर हुआ नहीं हुआ, देन आई डिडंट लूज होप। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, let us go back from there। वापस आए, बैंगलोर गए, and then skipped that engineering part because interest नहीं लग रहा था। Then came back to Chandigarh, I pursued my further studies, then MBA happened। MBA में then I started again singing, right? MBA में एक हमारा part था Symphonia, it was a music house, music club kind of a thing। वहाँ पे selection हुआ, and वहाँ पे I gathered all my friends and all, हम सब मस्ती मारते थे। And today आज भी वही दोस्त हैं कि आज भी फ़ोन आता है, यार जैमिंग करनी है, खन्ने जैमिंग करनी है। ऐसे तू गिटार मेरी आवाज़ चल करते हैं। सो हम रात को वहाँ पे MBAs में 2 बजे बैठ जाते थे, एंड वी जस्ट 2 people। धीरे धीरे तीसरा ऐड हुआ, चौथा ऐड हुआ, 5वां ऐड हुआ, 6ठा ऐड हुआ, एंड टिल 4 in the morning बस मिडले आ ही जा रहे हैं। आपको लिरिक्स आती है नहीं आती है, डजंट मैटर। ऑल इट मैटर्ड वॉज everyone was enjoying, everyone was listening, everyone was singing without even knowing the lyrics of the song, everyone was singing without even having a great knowledge of music।
Then Goa happened by destiny, honestly. उसके बाद जॉब लगी, हरियाणा में जॉब लगी, and for a while I did not have a job for a month or two. Then somebody told me, one of my close friends from MBA, कि गोवा में अपॉर्चुनिटी है, आएगा. I said, तू आएगा का क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन मार्क डाल रहे हैं, तो मुझे बस ये बता दे. I said, who denies for Goa? Definitely. Then of course Goa happened, and then of course it is a great company. This is ICICI Prudential life insurance company that I work in. Of course, it is not a bank. It is related to a bank because the bank that I work with, it's a bank channel actually. Okay. So there is a channel which. So Goa gave me an opportunity. Honestly, यहाँ के लोग इतने artistic हैं. You know, people like you give all the people inspiration outside that, you know, do something. You should do something about your life. You know, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको खाना बनाना आता हो, चाहे वो कुछ भी आता हो, so you know you have to create that visibility in front of people. चाहे कैसे भी हो, I mean you sing in pubs, you sing in clubs, you sing on the roadside. और the biggest thing is यहाँ पे कोई mind नहीं करता है, right? You know, there is a big cultural difference when I compare it to North India and Goa, right? वहाँ पे अगर हो सकता है मैं किसी क्लब में ऐसे गा रहा होता तो कोई ना कोई मुझे उंगली उठाता कि यार ये क्या गा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. बट हियर इन गोवा यू गेट ऑल द रिस्पेक्ट, you get applauses and you get, you know, you get your photos clicked, which gives you a feel of a celebrity, you know. हर एक का ड्रीम होता है यार. I also have a dream कि यार मैं भी कुछ बनूं. I should also open my wings and just थोड़ा सा fly करूं, you know. Everyone likes their limelight, not denying that. Then Goa happened, of course, so I took use of the Instagram, my social media channels, Facebook and WhatsApp statuses, and I started singing, just singing. You know, I used to come from office, in my office dress, stress बहुत होता था, pressure बहुत होता है, definitely I'm into sales, तो pressure हो गई. So गाड़ी में बैठ के शाम में I used to sing and dedicate to people. I thought, let's dedicate to people, let's make people smile. So गाने से पहले यही मोटिव होता था, you know, कि जो मेरे जैसे लोग हैं जो अभी अभी ऑफिस से आए हैं and they might have a bad day or something like that, they might have had a bad day, so उसको स्माइल करवाना है. कैसे स्माइल कराना है? लेट्स डेडिकेट. अगर मुझे कोई सॉन्ग डेडिकेट करेगा तो आई वुड डेफिनेटली फील हैप्पी, यू नो, कि हाँ मेरे लिए कोई गा रहा है, यू नो, स्पेशलाइज्ड मेरे लिए कोई गा रहा है. सो MBA में सिखाया गया था हमें स्पेशलाइज्ड सर्विस करके, यू नो, इफ यू गिव समवन अ कस्टमाइज्ड सर्विस एंड ऑल, एक्सेप्शनल सर्विस and make them smile, they feel really happy and out of the world. So that was my intention. Gana, sur gana, tal gana was not my intention at this point of time. To make people smile, to dedicate people and to create some visibility that, okay, this guy named Rohit Khanna on social media dedicates to people in his voice. Whatever they request. Requests आनी शुरू हुई Instagram के Facebook में messages requests आने शुरू हुए कि we want to hear this one in your voice. So I used to take names that, okay, hi Amar, this is for you. You know, you requested Dil Diya Galla, so I'm gonna sing this in front of you and spread the word. So ये धीरे धीरे start हुआ, you know, होता गया and बीच में pauses भी आए, pauses due to personal life or professional life, whatever it is, and then I didn't care to stop. No मतलब no, चलना ही है आगे. Then चलता गया. Many of the people told me कि यार आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, जाओ वहाँ पे, इधर जाओ, shows में जाओ, whatever, do it. And then you should create a YouTube channel. Of course, creating a YouTube channel is not tough and not doesn't require any great skill set. But of course, it needed some confidence, it needed some consistency that will I be able to do it? Because if I won't be able to do it, I'll just definitely spoil my name and I won't be able to recreate it. Once it's gone, it's gone. First impression is always the last impression. बहुत सोचा. It's 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीता. Now recently I got an opportunity कि यार अब start करते हैं, अब नहीं रुकते हैं. Let us start on social media as well. Let us create a YouTube channel as well. So Ganesh Chaturthi पे I've just created a YouTube channel with a Ganesh Aarti, with me singing alongside a karaoke. So karaoke YouTube is easily available and you know you can create whatever you want to, create whatever content and whatever song you want to. And I posted this YouTube channel on Ganesh Chaturthi and introduced to everyone I knew, right, to have a maximum reach. चाहे वो मेरे friends हो, my family, my known people, in fact my office colleagues as well, you know, to give the support. And to be honest, they've given me a huge support. So within 2 days time, I have 400 views, around some 70 subscribers and around 62 likes and I believe 19 comments. Very right. Nice. So super good as on date. So आज
आपके सामने बताया आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ बात करते हुए? So like I also saw the link which you sent me, and I was like very happy because see, the first time I met you, I came to know that you were a singer looking at a WhatsApp status. You remember I had messaged you? And then I'm like very happy, and I'm doing this podcast is because you also started a YouTube channel. This is my support to you as well. Thank you so much. So This means a lot. This clear crystal diamond words, I should say, means a lot for an artist, or you know, for every kind of person who's looking for some little support. कि ठीक है मेरा भी कुछ हो जाए जुगाड़. Yeah. So that you also like grow from your YouTube. Of course, yes. So bro, now we spoke about your music part from the beginning, when you spoke about how you got into music, then all this. Now let's just speak about the hustle part. Like tell me a story where it has all gone crazy. Crazy with terms with music, Yeah, or with music. with music, all right. So again, if you remember, I mentioning about when Papa got into the studio and वो कुछ हुआ था वहाँ पे, and the final decision on the table was कि नहीं, अभी पढ़ाई है. The hustle was, I came back, emotional तो था, and that rage में कुछ चीज़ें टूट गई मुझसे. उसको deliberately बोल लो but बोल लो whatever this the movies में होता ना that वो बाप अपनी बेटी को बंद कर देता रूम में, तू इससे शादी नहीं करेगी, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया. तो वही सीन मेरे घर में हो गया था. नो मीन्स नो, पहले पढ़ाई है whatever it is. दो ऐसा ड्रामा नहीं हुआ था, of course not. तो but still that rage part of it came a little more thing, and then I realized that जो मैंने किया, the lesson was, जो नुकसान हुआ वो मैंने अपने खुद का किया, right? Yeah. It didn't fetch me anything. It did not do good to me. It did not fetch a good result to me. बहुत बुरा लग रहा था मुझे वो देख के, यार मेरी एक बहुत अच्छी चीज़ थी वो तोड़ दी मैंने जानबूझ के, and जिसको मैंने संभाल के रखा हुआ था. So that was a big lesson. So I think hustle was that one. And major hustle was in fact I would say this is the biggest hustle की education, job and आपके passion को कैसे एक लाइन में balance करके चलना है, that is the biggest hustle. For example, my current job, of course, it has a lot of pressure, of course. Thanks to my manager, of course. I won't forget his name. अच्छे हैं. He gives time, right? जी और जीनो वाला हिसाब है. So then I get time post 6-7 कि मैं अपना खुद के लिए, it is my me time. I can do whatever I want to. So yes, this is the biggest hustle. In fact, in every artist's life who is involved in a professional way, some way, कि अपने जो education की है उसका ROI निकालना चाह रहा है, वो just like me. So वो hustle है, वो actual reality में hustle है, that how do you balance your professional life and your cage free life, because of course this is a cage. Definitely. ये बाउंड्री है, ये दायरा है, आपको दायरे में रह के काम करना है. How do you cross that दायरा? What do you do to cross that limit of yours? That is the game. That is all the game. That where magic starts happening. Once you cross that daira confidently, and when your both feet are out of it, then you have to take the baby steps. आगे. Without that, I don't think so anyone would be able to do something in life. वो केज से बाहर निकलना ही है. Do whatever you want. You want to do cooking. You want to do road trip, or do you want to do dance? You want to involve in music. That stress-free life is your right. Absolutely. Your stress cannot take a toll over you. If that happens, you're gone. There's no music, there is nothing. For me, this is my stress buster. Whenever I close my eyes, listen or sing, that is my stress buster. Automatically, एक मुंह पे smile आ जाती है, and I know I'm on the right path. Yeah. So wow, that's really amazing. And now we have spoken so much. Let's just also talk about you're into this banking field. You said Life insurance field, of course. So life insurance. So like I want you to tell people how important, because most of the youngsters, they must be not knowing how important is this life insurance for us. In what terms and why one should do it. So see, previously in our country, life insurance, or be it such as any policy which comes with an investment, of course itni awareness nahi thi. COVID happened, and there are now a lot of insurance queries that are coming into, and there is like, because it is directly related with health, that if someone is dependent on you, that someone
should not be in a hassle if I'm no more or if someone is no more, right? So there is what the demand has been generated there. Then it's like people are not now aware कि भाई हाँ life insurance is something. People usually come to us asking okay ये कितने में मिलेगा, मुझे इतना कवर कितने में मिलेगा, और डायरेक्टली people come to us asking कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है या कुछ लेना है, you know. So now people are getting aware, of course, because in other countries, in European countries, there is completely medical सारा कुछ facility है, you get life insurance covers also from the government. But here in India we do not have any such facility as of now, you know. Even if you have a cover, that will be basic. I feel LIC would be having every single policy in every household. किसी ना किसी एक के पास तो होगा ही, फादर के पास, मदर के पास, बच्चे के पास, बच्चे के नाम पे, बेटी के नाम पे, पोती के नाम पे, एंड सो ऑन. एंड दैट हैज़ अ वेरी स्मॉलर अमाउंट ऑफ अ लाइफ कवर. 5 लाख 10 लाख आज के टाइम में कुछ भी नहीं है. यू नो, इफ समथिंग हैपेंस टू समवन हु इज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड यू आर गिविंग 10 lakhs in return, it doesn't matter for that family. True. But now huge amounts matter, you know. Basically life insurance term covers include 1 crore, 50 lakh and so on. So yes, definitely it is important in one's life. So the person, अगर कोई dependent है आपकी family में, definitely I would suggest buy a economical life insurance, buy a trustworthy life insurance. Take that survey कि भाई claims किसके अच्छे हैं, because you do not want your beloved to be in a hassle to take the claims and all, right? सारा कुछ survey करो, चाहे वो online करो, चाहे वो offline करो, and then you take a wise decision, regardless of any brand, because there are various brands, there are various agents roaming around कि हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो. It is like just a normal pizza, right? आजकल जैसे पिज़्ज़ा है कि हाँ पिज़्ज़ा हट भी है, डोमिनोज भी है, सस्ता किसका है, टिकाऊ किसका है, टेस्ट किसका अच्छा है. Lot of things are there in life insurance also. So I should feel that, you know, consumer should rely on every single brand, take a survey. Online आजकल सब कुछ है, there is Quora, there is LinkedIn, सब कुछ, every single thing is there. Take a proper feedback from every mouth and then take a wise decision of going and connecting to a brand. So now, you know, you told about this life insurance, right? Now, like, what are the key elements that you have to look into? Like, you know, you're saying the research, yeah? But what are those few elements which we need to look into before choosing a life insurance? So number one is the life cover that you need to look upon to, right? That if supposedly I'm 30, which I might be, which I'm not, I cannot say. Yeah. But let's suppose I'm 30, so I need to look upon that आगे के जितनी टाइम मैंने जॉब करनी है, be it for 30 years, 40 years, उतना मैं कितने में कमाने वाला हूँ. So this is called a human life value. So accordingly you choose your cover and then accordingly you see that सबसे economical किसका पड़ रहा है, right? Budget based किसका पड़ रहा है, and what all you're getting in that particular budget, because there are so many companies which are maintaining a healthy competition. एक चीज़ किसी में नहीं है तो वो दूसरे में होगी, दूसरी चीज़ किसी में नहीं तो तीसरे में होगी. Combined 360 degree view हो, that is better, you know. See if it includes your health benefit, see if it includes your accidental benefit, see if it's include your medical and your natural death benefit, right? And then you take a decision. See what is being given as a free rider. For example, आजकल की गाड़ियों में airbag standard होते हैं, right? So there is every policy, there are some brands which come with free riders which are standard in every basic plan also. See that and then see the claim ratio as well. I should feel alongside the cover that you choose, the claim ratio should be the second thing that should come in a man's or a woman's mind. Ki haan, the claim ratio. If it's less, there is no point, because you are putting onto something which you are making a promise. Ki haan, I'm assuring myself that if I'm paying something, I should get back something, or I will get back something. So claim ratio is number one, topping the chart, and then later on, I believe few things. Okay, so like for myself, like recently I did a, you know, मतलब मैंने भी मतलब ऐसा health insurance किया, but I wanted to know, like, you know, like I am young, so I did it with my family, in the sense my mom and dad. So is it like a correct thing, like if you are young you should do it like for the Absolutely. The more younger you are, the more lesser the premiums are, because it's like just an insurance, because you are paying me money to secure your life, and as a business, as a company, I don't want that something should happen to you, right? Yeah. Because if something happens to you, I'll have to pay 1 crore or more, because बात यहाँ पे not just 10,000 की हो रही है, बात यहाँ पे lakhs में हो रही है. So no business would want to pay you, because it is an expense for the company, or it is an expense for the business.
So no company would want you to suffer for anything, any death kind of a benefit जिसको मेरे को pay करना पड़े आपको, right? So I'll make sure that you're younger in age, you have no health issues, absolutely, because if you have health issues, you are much more higher risk, right? And then a few more things, of course, right? And of course, younger the better. Yeah. Now also I wanted to give a difference, like what is life insurance and what is health insurance. These are definitely Absolutely, yes. So life insurance completely means term insurance, right? Life insurance companies only pay you or your nominee, for example, if something happens to you. That event is death, completely death, right? Okay. Be it natural, be it accidental, however, right? When it comes to health insurance, it means your hospital का bills. Hospital में जो भी आप चीज़ करवा रहे हो, be it an OTB, एक procedure हो रहा है, एक surgeries हो रही हैं, heart surgeries and various other things, right? So वो चीज़ वहाँ पे आ जाती है. So medical insurance doesn't pay you anything if you know more, right? आजकल कुछ और आ गया होगा, add-ons हो गए होंगे, future में कुछ add-ons होना, that is a different thing altogether. But basic difference is that life insurance pays only a nominee when you are no more, and hospital or medical benefits pay you while you're still alive, while you're still paying for your hospital expenses. Just that आपकी जेब से ना जाके वो कंपनी की जेब से जा रहा है. That's all. Also now these are the insurance part. Let's also make some statement on the mutual funds. Like if you can. Well, I will not certainly comment on that because again depends on the individual risk capacity, of course, and depends. However, because we still have those families in the country which only rely on FDs, right? And so I'm really not sure whether I'm the right person to comment on a table right now. Definitely. So that was really amazing sharing all this with you. Thank also, you. Aaron has some questions. Please shoot on. You mentioned that your job's hectic. What's like the usual schedule of in a day, like what? So I'm into sales, and people who are watching this and people who are into sales would definitely correlate with me that we start at early, basically 9:15, and then वापस आने का there is no time, right? Depending on the schedule you have. Basic official timings are 9 to 6:30 or 7 at the max. But of course, depending on the work and all, वहाँ पे, and then you have to meet your clients, and then you have to convince your client, to take this product, right? To convince, to know him. So all that psychology is a mind game, right? कि आपको उसको जानना है. Firstly, that what is he looking for? उसकी ज़रूरत है भी या नहीं भी? नहीं है, then definitely you should be someone who should be trained enough to create that ज़रूरत, need. We all have shampoos at our homes, right? People have different kinds of shampoos. So why are these shampoo companies and why are these soap companies advertising so much? Because they are creating a need, right? कि हाँ, आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, hair loss हो रहा है तो बाल उग जाएंगे. So there is a way to create that need. Now, of course, it becomes hectic when you have many appointments and you have to manage a bigger area, right? You have a wide scope. So, and then when the work timings are as such कि हाँ, अगर emergency होगी तो रात को आपको 8 बजे भी पहुँचना पड़ सकता है. And it is okay, completely fine. The work requires a lot of things, and of course you're getting the money, right? You're getting the dal roti, because I'm wearing good clothes. So, how it's like a normal person, if like a guy who's studying or whatever, what's the risk to get into your job? Probably I won't be able to suggest or advise anything. I would be only be able to advise one thing, that whatever you want to do, get into that, right? Get into that. If you have some dream, your childhood dream, and you know that आपके वो थोड़ा सा पास है दिल के, you be that. For example, at one point of time, I wanted to become a pilot because I still fantasize about airplanes. I still, whenever I go to the airport, I still ऐसे यार वो pilot को देखो, उसके जूते देखो, they have a different style altogether. They walk, they wear that aviators and all, out of the world, आज भी वो fantasize होता है. But then हमारा गणित बहुत weak है, that physics and all that thing कि हवा कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, Plane कैसे घुमाएंगे? So that way, So after that engineering thing happened, I wanted to become a pilot. But someone asked me that how good you are in mathematics and physics. I said, I'm not that great, I'm sorry. I have to be honest, because it's the career at stake. It is the money that is at stake.
So I would advise to people, youngsters, or whoever is looking up on as of now, that do whatever you want to do. Be it sales. आपको अगर sales में जाना है तो you should be a people's loving person. आपको लोगों से बात करने का मन होना चाहिए. You should not be an introvert कि हाँ आप घुस गए सेल्समैन, आपसे बात नहीं हो पा रही है. That is then you're not your cup of tea. Then you should get into some back end jobs या product jobs, जहाँ पे लोगों से interaction थोड़ा सा comparatively कम हो, right? And then जहाँ पे PC का job ज़्यादा हो. So extrovert जो भी हैं, of course, those people would prefer extroverts. Of course yes, because they are people's person. लोगों से चाहे कोई भी हो, be it a rich person, be it a middle class person, be it a high class person, लोगों से बात करना आना चाहिए, लोगों से बात करने का मन करना चाहिए. They try to open up, चाहे वो अपनी story बता रहे हो, right? So yes, of course. And I definitely want to add here that being in sales is the most important and the most craziest thing, because you come around different people. Of course, yes. And you learn a lot from them. Absolutely. And you interact, and at the same time you're growing your contact as well. So Definitely. I really love sales, and so it gives you a different confidence altogether. So if you look at me around maybe around 7 to 8 years back, I was not at all this confident, or I was not about I was a introvert बच्चा कि जिसको पार्टीज में जाने से थोड़ी सी शर्म आती थी, जिसको मैं अवॉइड करता था कि मैं ना जाऊँ, चाहे मैं आगे एक ही टेबल पे बैठा रहा हूँ एंड बी विद माई मॉम डैड, राइट. बट अभी ऐसा हो गया दैट यस, अगर कुछ भी आता है तो आई कैन कॉन्फिडेंटली कैरी माई सेल्फ कॉन्फिडेंटली एंड प्राउडली, एंड आई कैन बी माई सेल्फ, राइट. आई कैन बी लाइक फॉर एग्जाम्पल यू इन्वाइटेड मी एंड आई केम आउट हैप्पीली. आई डिड नॉट आस्क यू क्वेश्चंस. आई सेड कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा. एंड सेल्स प्रिपेयर यू फॉर दैट. द सेलिंग पॉइंट इज सेल्स प्रिपेयर यू फॉर दैट कि वट एवर हैपन्स देखा जाएगा. यू जस्ट मेक द फर्स्ट स्टेप एंड लेट इट गो. Okay, so like Rohit, now I want you to sing this Chukar Mere Man Ko for me, and because it's my favorite song as well, and I don't want you to sing the whole song, but from the start and a bit of it for me and my audiences. Surely, definitely, I would love to do that. I would definitely love to do whatever I can for my audience and for you as well. So I'll give you a count in 3 Wow. and 2 and 1, go. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, हो बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. So wow, that's really full power, bro. Thank you. And now that we spoke so much and you have given us so much information from your music, from your education to the mutual funds and to the Chukar Mere Man Ko. मेरा मन तो वैसे भी आपने छू लिया. So well, audience का चुलू, that is what I want through your guys, support. It's almost we are about to end this podcast, and Rohit, now you have a YouTube channel. Yes. Definitely tell people more about it, and definitely follow Rohit in his new YouTube channel, because he'll keep on putting music, and he's putting music to make your day. Of course, yes. So I want to end this podcast with one thing. People's happiness give you all the smiles that you want, or I should say, people's smile give you the happiness, whatever way you want to take it into. But ultimately, it's all about people who are listening to. They should smile, and your work is done, your job is done. You feel happy from inside, and khalas, wahin pe. Right? So yes, follow me on YouTube channel by searching Rohit Khanna. Of course, there might be 2 channels, and but search Jai Ganesh Deva. That is my very first post on the YouTube channel by Rohit Khanna. So you definitely would hit the target over there. So yeah, I'll mention his link in my description, and thank you so much Thank for coming you. to this show, and full power, bro. Yes.